Today we honor a man who is among the foremost surgeons in the Asia-Pacific region, Dr. Raghu Ram OBE. Dr. Raghu Ram has revolutionized breast cancer care in India through a series of innovative measures. This disease ranks as the #1 cancer among Indian women, with around 1 in 22 women affected, half of whom will die from the disease. Dr. Raghu Ram implemented South Asia's largest population-based screening program in the southern Indian states of Telangana and Andhra Pradesh. This program is currently being rolled out nationwide through the Government of India's National Health Mission. Dr. Raghu Ram developed the world's first breast health mobile phone app in English and 11 commonly spoken Indian languages. Dr. Raghu Ram conceived, designed and established South Asia's first purpose-built comprehensive breast health center. In an earnest endeavour to standardize breast health care in the country, he played a pivotal role in formation of the Association of Breast Surgeons of India, thus bringing together surgeons practicing breast surgery under one platform. Dr. Raghu Ram adopted a remote village in the southern Indian state of Telangana, Ibrahimpur, where he has been providing life-changing equipment and facilities through his personal philanthropy. He is one of the youngest surgeons elected to have served as President of the Association of Surgeons of India for the year 2020. In recognition of his outstanding academic track record, innovative initiatives that have transformed breast health care in India, and life-transforming philanthropy in his adopted village, Dr. Raghu Ram was conferred the prestigious Padma Shri by the Honorable President of India. Dr. Raghu Ram is also one of the youngest surgeons to be conferred Dr. B.C. Roy National Award by the Honorable President of India, which is the highest recognition that can be achieved by a doctor practicing medicine in India. He is a fellow of the American College of Surgeons and all 4 royal colleges in the British Isles, Edinburgh, England, Glasgow and Ireland. He was conferred honorary FRCS by the Royal College of Surgeons of Thailand, Sri Lanka and Chinese College of Surgeons. Dr. Raghu Ram achieved the rare distinction of becoming one of the youngest surgeons of Indian origin in over 100 years to be honored with an OBE, Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Ladies and gentlemen, Dr. Raghu Ram OBE. Namaskaram. Today is a historic day, the 50th anniversary of International Women's Day. As we celebrate the remarkable achievements of women over the past 5 decades, we mustn't forget that a woman is the nerve center for the family. If she is well, the family would be well. And so, on this landmark day, I am deeply grateful for the opportunity to empower women and indeed men about the ABCs relating to the most common cancer affecting women in Bharat. As they say, everything begins with a story. My real story began when my mother was diagnosed with breast cancer 23 years ago. Dr. USHALAKSHMI was a renowned gynecologist and a gritty breast cancer conqueror who inspired an impactful breast cancer advocacy campaign and a robust population-based screening program in the southern Indian states of Telangana and Andhra Pradesh. At 91, she left this world 5 months ago. I pay tribute to her indomitable spirit and dedicate this presentation to her on this auspicious day. I am acutely conscious of the fact that there is a fine line between advocacy and creating a scare. The primary responsibility of our health lies with us, not with someone else, but with us. And therefore, it's very important to take care of our health because health is wealth.
and health is the best wealth that one can have. The aims of my presentation are essentially fivefold. Firstly, to touch upon the incidence, mortality, causes and risk factors for breast cancer. Secondly, to demystify some of the common myths. Thirdly, to highlight aspects relating to diagnosis, staging and treatment. Fourthly, to emphasize the importance of counseling in cancer care. And finally, to outline strategies for prevention, screening and advocacy. Breast cancer in India is a tsunami. With 200,000 new cases being diagnosed every year, a woman is diagnosed with breast cancer every 4 minutes, and it has overtaken cervical cancer to become the most common cancer affecting women in our country. Sadly, 100,000 deaths per annum. A woman succumbs to breast cancer every 8 minutes in our country, and so for every 2 women diagnosed with breast cancer, 1 dies from it. The worrying facts are breast cancer is a closet issue. It's a topic that is hushed up. Due to lack of awareness and absence of a robust population-based screening program, more than 60% of breast cancers present in the advanced stages. This is a mammogram, an X-ray of the breast, and as you can clearly see on the right side, there is a large breast cancer. This lady has presented with a locally advanced breast cancer due to lack of awareness. From time to time, you will see various monuments and historic buildings illuminated in pink. Pink stands for breast cancer awareness, and this is during the month of October. Various monuments are illuminated in pink to create that much needed awareness about early detection. This is the historic Charminar, which has turned pink consistently over the past 15 years in Hyderabad. What is breast cancer? When cells in the breast begin to divide and grow in an unusual and uncontrolled way, breast cancer can occur. Essentially, the vast majority of breast cancers occur within the duct, which is called ductal carcinoma. A small proportion of cancers occur within the lobules, which is referred to as lobular carcinoma. In addition to this, there are certain specific types of cancer such as inflammatory cancer, which is an aggressive type of cancer, Paget's disease of the nipple, which is a cancer involving the nipple areolar region, and Phyllodes cancer. What causes breast cancer? Any factor that increases the exposure of the hormone estrogen for a prolonged period of time on the breast can potentially cause cancer. There are well recognized risk factors, and the most important of them is being a woman and previous history of breast cancer. In addition, when periods start early under the age of 12 years or when the periods don't stop after 55 years, there is a prolonged action of the estrogen on the breast which can potentially cause cancer. There are lifestyle issues, lifestyle factors which are also responsible for causing breast cancer. Obesity, particularly after menopause, because fat cells can produce estrogen. Prolonged use of hormone replacement therapy. Late marriages, not having children, having the first child after 30, not breastfeeding are also very important risk factors. There is a myth that breast cancer only happens to middle-aged women and older women. In fact, younger women can and do get breast cancer, and indeed, compared to the Western world, where breast cancer is very common after the age of 50, in our country, the peak incidence of breast cancer is between the ages of 40 to 50. There is also a misconception that family history of breast cancer is the most important risk factor for developing breast cancer. In fact, the vast majority of women with breast cancer do not have a family history of breast cancer. Strong family history, that is genetic predisposition,
accounts for only 5 to 10%. And therefore, I am asked these common questions in the clinic. My mother had breast cancer. Am I at an increased risk? My grandmother had breast cancer. Am I at an increased risk? The answer is no. Isolated family history is not considered to be a strong family history, and most women do not have a significant family history, and so their overall breast cancer risk is not affected. Strong family history or significant family history because of abnormalities in BRCA1 and BRCA2 genes occur in the following situation. When one or more close relatives have had breast cancer under the age of 40, or two or more close relatives who have had breast cancer at any age, close relatives who have had breast cancer and others who have had ovarian cancer, and a male relative who has had breast cancer. As you can see here, Angelina Jolie, a very popular Hollywood actor, had a very strong family history of breast cancer in that her mother, her grandmother, her sisters and aunts have had breast cancer and ovarian cancer in the immediate family. And so, she got a blood test done to look for abnormalities of BRCA1 and BRCA2 genes, and she tested positive, and she underwent prophylactic removal of breasts and ovaries, which is one of the treatment options for those who have a hereditary risk of developing breast cancer. There is a fine difference between advocacy and creating a scare. Angelina Jolie's decision was certainly right for her, and this information relating to hereditary breast cancer became known worldwide. On a positive note, it has increased awareness, but in a country like India, where there are very few centers which offer genetic counseling, it has caused enormous anxiety amongst the worried well, who in fact do not fit into the category of significant family history. And therefore, before getting the genetic test done, counseling is absolutely crucial. The emotional drive to get the test done just in case must be resisted, because the treatment for hereditary breast cancer involves a multidisciplinary team working closely with the patient and her spouse. There are essentially three ways of addressing hereditary breast cancer. The first is surgery, which involves prophylactic removal of breasts and ovaries, followed by bilateral breast reconstruction. The reason for removing the breasts and ovaries is there is a very high chance of developing breast cancer in those who have tested positive for BRCA1 and BRCA2 abnormalities. The non-surgical options include close surveillance by alternating a mammogram, which is an X-ray of the breast, with an MRI of the breast every year. And the third option is to use a drug which is used for breast cancer, tamoxifen, for 5 years. As you can see, management of hereditary breast cancer is not simple, and therefore getting a genetic test done just in case should not be done and must be resisted. I am now going to touch upon some of the common myths. Pregnant women do not get breast cancer is a myth. In fact, pregnant women also can get breast cancer, but in pregnant women the breasts feel lumpy anyway, and so it can be quite difficult to detect any changes in the breast, and therefore it is vitally important that if there is any persistent change in the breast even during pregnancy, one must not ignore. It is a myth that breastfeeding prevents breast cancer. Breastfeeding significantly reduces the risk, but it does not prevent breast cancer. There is a myth that injury to the breast can cause breast cancer. The fact is, injury to the breast does not cause breast cancer. Wearing a bra or a tight-fitting bra or an underwire bra can cause breast cancer is a myth, because there is no scientific evidence linking wearing a bra or wearing an underwire bra leading to breast cancer. Deodorants and antiperspirants cause breast cancer is a myth. There is absolutely no evidence to suggest that deodorants and antiperspirants cause breast cancer. To the men watching this program,
men do not get breast cancer is a myth. In fact, men also have breast tissue and men can indeed develop breast cancer. It's not common, it's not uncommon, it is rare. Less than 1% of all breast cancers occur in men. In India, we don't have precise statistics, but in a country like United Kingdom, somewhere between 300 to 400 new breast cancers are diagnosed every year. Long-term hormone replacement therapy does pose a high risk of breast cancer, and longer it is used, the risk is greater. Breast cancer risk is greater with combined HRT, which contains estrogen and progesterone, than with estrogen only HRT. Within 5 years of stopping HRT, this increase in risk disappears. Women who have been treated for breast cancer and those who have a strong family history of breast cancer, as evidenced by BRCA1 and BRCA2 positivity, should not take HRT. Birth control pills, the risk is small and the risk significantly declines after stopping the pill and disappears 10 years after stopping the pill. Having a risk factor means certainty of getting breast cancer. The risk of getting breast cancer actually, in fact, is not a certainty, even if it is one of the strongest risk factor. Can breast cancer be prevented? Although it may not be possible to strictly prevent breast cancer, but there are many lifestyle changes that can be undertaken to significantly reduce the risk. The first amongst them is weight control. Obesity is a rising problem in the country, and our Honorable Prime Minister has rightly emphasized about this and has nominated 10 people, prominent citizens of this country, to work on creating the much needed awareness about controlling obesity. Secondly, physical activity, 30 minutes of regular exercise every day, at least for 5 days in a week. Healthy diet, plant-based diet, high fiber diet, vegetable rich diet, and with lots of fruits, very important on a daily basis. Breastfeeding for at least 6 months. The longer someone breastfeeds, the better it is. To stop smoking, strictly stop smoking and limit alcohol. There is a myth that breast self-examination is no different from breast awareness. Breast self-examination is a regular, repetitive, monthly self-examination of the breast performed by the lady at the same time each month to a set method. The concept of breast self-examination has not been proven to be beneficial, and the concept now is called breast awareness, where women recognize any changes in the breast throughout the month, whether they are having a shower or when they are applying soap. It is very important when they are bathing to recognize any changes throughout the month, not at one specific time in the month. And so this is a concept that encourages women to know how their breasts look and feel normally, so that they gain confidence about noticing any change which might help detect breast cancer early. So this breast awareness as a concept is gaining increasing acceptance world over. What are the changes that one need to be aware of? Any painless lump in the breast, I stress the word painless lump in the breast, any change in the size or shape of the breast, any change in the skin overlying the breast, that is puckering or dimpling, any change in the color of the breast may look darker, red or inflamed, any recent changes to the nipple like retraction of the nipple, eczema around the nipple, and any blood-stained discharge from the nipple. If these changes are there, they must not be ignored, and it's very important to consult a doctor without delay. So the 5-point code for breast awareness is to know what is normal for you, to know what changes to look and feel for, to look and feel, report any changes to your doctor without delay, and finally, importantly, to have a mammogram, an X-ray of the breast annually or at least once in 2 years if you are aged 40 and over. This is the beautiful Buddha statue in the center of Hussain Sagar Lake.
that separates Hyderabad from Secunderabad, which has turned pink in the month of October. Now, this component of my presentation touches upon how breast cancer is diagnosed. It is very important to understand that to diagnose a problem in the breast, it is absolutely essential to get a triple assessment done. The first component of the triple assessment is taking a good history and examining the patient. The second component is a combination of mammogram, which is an X-ray of the breast, and an ultrasound scan of the breast. And the third component is, if there is an imaging abnormality, a lump or any abnormality in the breast, a core needle biopsy must be done and not a fine needle biopsy. It is important to understand that there is a difference between core needle biopsy and fine needle aspiration cytology. The core needle biopsy, which is a needle which takes a tissue from the breast, is the gold standard, and it must be done under ultrasound guidance. Why is triple assessment essential? Because 9 out of 10 breast health issues are not related to cancer. Only 1 out of 10 breast health issue is a cancer, and triple assessment is a reliable method to obtain a definitive diagnosis without the lady going under the knife. The triple assessment is done by a surgeon, pathologist, and a radiologist. Just as a stethoscope is essential for a physician or a cardiologist, the essential requirement for a surgeon dealing with breast disease is to have a good pathologist and a good radiologist, because triple assessment cannot be done by a single person. So, coming to the first component of the triple assessment, taking a history. As you can see in this cartoon, the doctor is talking down to the patient. The patient is very anxious, sitting at the edge of the chair and cannot converse. And you look at this cartoon where the doctor is listening to the patient. So, it is very important for the doctor to have big ears and hear the patient, because history is very important. The other aspect of the first component of the triple assessment is for the doctor performing a clinical breast examination. So, the second component of the triple assessment is a combination of mammography and ultrasound scan. As you can see here, this is a mammogram machine, a digital mammogram machine. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, and 3D mammography, as some of you would have heard, is the most recent revolutionary advance in detecting early breast cancer. As the name implies, 3D mammography creates three-dimensional images of the breast, and it displays more images of the breast and in thin sections of breast tissue, and the advantages are that it is more effective in detecting early breast cancer, particularly in younger women who have dense breasts. It significantly decreases the false positive result and unnecessary recall rate, and indeed it is more comfortable because of the reduced need for additional imaging. There is a myth that mammography is 100% accurate in detecting breast cancer. The fact is, mammograms are the most efficient way of picking up breast cancer early, but like any other screening tests, they are not perfect. The accuracy of mammography, even in the best of hands, is about 85%. Why is that? Some cancers are very difficult to see on the mammogram, particularly lobular cancers. Secondly, the person reading the mammogram can miss the cancer, and this will happen occasionally, no matter however experienced the reader may be. The other aspect of the second component of the triple assessment alongside mammography is ultrasound scan of the breast. It is an important value addition to mammogram. It helps localize abnormalities seen on mammogram, it detects lesions not seen on mammogram, and it guides accurate biopsy of the breast lesion, that is image guided biopsy. It is also important in breast cancer to have an ultrasound scan assessment of the armpit, because the first port of call for breast cancer is to go to the lymph nodes in the armpit. Preoperative determination of axillary node status is very important whilst deciding on the treatment, because
the vast majority of node positive women, that is when the cancer is present in the lymph nodes, can be identified without the need for an operation with the help of this ultrasound done in the axilla and with an ultrasound guided needle biopsy. And that is an image showing a few lymph nodes which are abnormal in the armpit. The third component of triple assessment is an ultrasound guided core needle biopsy. You can see the image here, which is a blackish structure which is a cancer and the white needle going into the lesion. I would like to emphasize again here that image guided core needle biopsy is the gold standard and not an FNAC. This is the beautiful Durgam Cheruvu cable bridge which has been illuminated in pink in the month of October in Hyderabad. So, once a diagnosis is made, what next? Counseling patients and their spouses is of paramount importance before instituting treatment. When the diagnosis of cancer is explained to the patient and the spouse and the relatives are very anxious. It is very important to take time in breaking bad news. And is counseling important in breast cancer treatment? Absolutely yes. There are many times when patients are upset with doctors because doctors fail with words, and communication is a distinct art to talk medicine in the language of a non-medical man. There are numerous questions that may come to the mind of the patient. The first is, how long will I live? Will I need to get my breast removed? Is this the best treatment for me? Are there any options? What are the side effects? What are the short and long term complications? Will it impact on my everyday life? All these questions must be addressed in an unhurried manner by the doctor, because counseling, in my opinion, is more than 50% of the treatment, because you can cure sometimes, you can relieve often, but it is absolutely essential to comfort the patient always. This is the beautiful KIMS Hospital's building illuminated in pink. I would like to stress here about the importance of grade and stage of the cancer. The grade of the cancer is a potential for the cancer to spread. A grade 1 cancer is a slow growing cancer, a grade 3 cancer is a fast growing cancer. The stage of the cancer determines whether the cancer has metastasized, that is, whether it has spread to different parts of the body. Essentially, stage 1 and stage 2 cancers are considered to be early cancers where cancer is confined to the breast, whereas stage 3 cancer and stage 4 cancers mean that the cancer is very large or it has spread to different parts of the body like the lung, liver, bone or the brain. And so, the grade represents the potential for the cancer to spread, and the stage in fact determines the extent of spread of cancer. This is the majestic Telangana Legislative Assembly building which was recently constructed, which turned pink in the month of October in Hyderabad. Having diagnosed the cancer and after adequate counseling, it is very important to understand that a multidisciplinary team should be involved in determining the treatment that should be offered to the patient. The multidisciplinary team includes the surgeon, radiologist, pathologist, medical oncologist, radiation oncologist, a breast care nurse, and if required, a palliative care specialist as well. There are essentially 5 modalities of treatment that is determined by the multidisciplinary team. The treatment is very personalized. This includes surgery, chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy, and targeted therapy. There is a common myth that mastectomy or women who undergo mastectomy survive longer. The fact is absolutely not. There is no evidence to suggest that those women who undergo mastectomy survive longer, and the number of women undergoing breast conserving surgeries, that is lumpectomies, have increased significantly since 1980s. I would like to just touch upon
oncoplastic breast conserving surgery, which involves a few techniques that have evolved in the recent times that aims to reshape the breast after a lumpectomy. It combines oncological principles with plastic surgical techniques. The aim is complete removal of the cancer with clear margins, but emphasis is on achieving good cosmesis to the breast after the surgery. This is the Raj Bhavan, the only Raj Bhavan in the country in Hyderabad, which has been turning pink year after year, starting with 2020 during the COVID year. Over the past 5 years, Raj Bhavan has been turning pink in support of breast cancer awareness. The final component of my presentation is to touch upon the importance of screening and breast cancer advocacy. I am asked this common question: Doctor, I don't have a lump. Do I need a mammogram? The answer is yes, because mammograms detect breast cancer many years before the lady or the doctor can feel the lump, thus significantly improving the survival. The other question is, Doctor, I had a normal mammogram last year, so why are you asking me to get another one this year? The answer is, mammography ensures early detection. It does not prevent cancer. It's good that someone has had a screening mammogram last year. However, there is no guarantee that the mammogram in subsequent years would also be normal. Having a mammogram every year increases the chance of detecting cancer when it is very small, before the doctor or the patient can feel it, and there is very strong evidence to this fact. Detecting cancer very small in the impalpable stage ensures excellent long-term survival. So, it is very essential for women to have an annual screening mammogram after the age of 40. This is a mammogram, an X-ray of the breast, a screening mammogram, so to speak, which shows a small cancer which measures about 10 millimeters, which would have taken several years before this lump could have been felt. What is breast screening? Breast screening is therefore an X-ray of the breast, and it can show breast cancers at an early stage when they are too small for the woman or the doctor to feel. This is an X-ray of the breast which shows a cluster of pleomorphic, malignant, cancerous microcalcifications which has been picked up in a 50-year-old lady who has presented for screening. This would have taken a long time for it to have formed a lump, and therefore it is so important to get the screening done. And why should one have screening? Screening helps to find small changes in the breast before it shows up, and early detection of breast cancer offers the best chance for this lady to have successful treatment, which significantly improves her chance of long-term survival. Is breast screening effective in all age groups? Breast screening is only effective in women over the age of 40 years. So, if you have turned 40, get a screening mammogram done once a year. The two common reasons why women hesitate to go for a mammography is, firstly, women think that mammography induces radiation hazard. This is not true. Radiation from mammography is very, very small. It is equivalent to the background radiation that we all experience in over a 2-month period. And the radiation effect from this mammography is so tiny that one does not need to hesitate from getting this test done. The second reason why women do not go for mammography is that they think there is a lot of pain. The answer is, there should not be pain if it is done properly. There should be only momentary discomfort. The benefits of having a mammography far outweighs any risks. Does breast cancer screening prevent breast cancer? No. Breast cancer screening only helps to find breast cancer in the early stages.
A few months ago, I had the distinct honor to interact with our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, where I was able to highlight the impactful initiatives spearheaded by the foundation over the past 18 years. He was very impressed and even signed the editorial page of the Pink Connection, which is the quarterly news publication. He tweeted about it as well, and this has been an unforgettable moment in my life. In conclusion, early detection saves lives. If you are 40 years and over, please schedule a screening mammogram and get it done every year without fail. I would like to point out here that traditionally, women in our country keep their own needs to the last, and for them, the needs of the family always come first. And their own well-being and their own health is no exception. It's still the last priority. I would like to reiterate my opening statement that a woman is the nerve center for the family. If she is well, the family would be well. It is the bounden duty of men, all of us watching this program, it is the bounden duty of men to ensure that the women in their lives get a screening mammogram. Whether it's your mother, your spouse, your sister, your grandmother, your aunt, and also your friend, please ensure they get an annual screening mammogram if they are 40 years and over. This, ladies and gentlemen, is the best gift that you can give to them. This simple and kind gesture has a potential to save scores of lives through early detection. And on this historic day, let's take a pledge that we will ensure that the women in our families would get an annual screening mammogram, and let's make it happen. My heart beats for early detection. Does yours? Based upon my presentation, I shall now display 5 questions which have to be answered with a simple yes or no, and I am very sure that you can easily answer them. The first question: breast cancer is the commonest cancer affecting women in India. Yes or no? Second question: breast cancer does not occur in men. Yes or no? Painful lump is the commonest symptom of breast cancer. Yes or no? Fourth question: mammogram is the best screening modality to detect breast cancer in early stages. Yes or no? And the final question: counseling the patient is a vitally important component of cancer care. Yes or no? Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Wishing you good health and Namaskaram. नमस्कारम। आज एक ऐतिहासिक दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ। पिछले 5 दशकों में महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक महिला परिवार का केंद्रीय तंत्र है। यदि वह स्वस्थ है तो परिवार भी स्वस्थ होगा, और इसलिए इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं महिलाओं और वास्तव में पुरुषों को भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे आम कैंसर से संबंधित ABC के बारे में सशक्त करने के अवसर के लिए गहराई से आभारी हूँ। जैसा कि कहा जाता है, सब कुछ एक कहानी से शुरू होता है। मेरी असली कहानी तब शुरू हुई जब 23 साल पहले मेरी माँ को स्तन कैंसर का निदान हुआ था। डॉक्टर उषा लक्ष्मी एक प्रसिद्ध स्त्री, रोग विशेषज्ञ और स्तन कैंसर से जुझारू विजेता थीं, जिन्होंने एक प्रभावशाली स्तन कैंसर जागरूकता अभियान और दक्षिणी भारतीय राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मजबूत जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग कार्यक्रम को प्रेरित किया। 91 साल की उम्र में वह 5 महीने पहले इस दुनिया से चली गईं।
मैं उनकी अदम्य भावना को श्रद्धांजलि देता हूं और इस प्रस्तुति को इस शुभ दिन पर उन्हें समर्पित करता हूं। मुझे इस तथ्य की गहरी जानकारी है कि वकालत और डर पैदा करने के बीच एक महीन रेखा होती है। हमारी सेहत की प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे साथ है, न कि किसी और के साथ, बल्कि हमारे साथ। और इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेहत ही संपत्ति है और सेहत सबसे अच्छी संपत्ति है जो किसी के पास हो सकती है। मेरी प्रस्तुति के उद्देश्य मूल रूप से 5 गुना हैं। पहला, स्तन कैंसर की घटना, मृत्यु दर, कारणों और जोखिम कारकों को छूना। दूसरा, कुछ सामान्य मिथकों को दूर करना। तीसरा, निदान, स्टेजिंग और उपचार से संबंधित पहलुओं को उजागर करना। चौथा, कैंसर देखभाल में परामर्श के महत्व पर जोर देना। और अंत में रोकथाम, स्क्रीनिंग और वकालत के लिए रणनीतियों को रेखांकित करना। भारत में स्तन कैंसर एक सुनामी है। हर साल 2 लाख नए मामले निदान होने के साथ हर 4 मिनट में एक महिला को स्तन कैंसर का निदान हो रहा है। और यह सर्वाइकल कैंसर को पीछे छोड़कर हमारे देश में महिलाओं को प्रभावित करने वाला सबसे आम कैंसर बन गया है। दुख की बात है, प्रतिवर्ष 1 लाख मौतें हमारे देश में हर 8 मिनट में एक महिला स्तन कैंसर से मर जाती है। और यह अक्टूबर के महीने के दौरान होता है। विभिन्न स्मारक गुलाबी रंग में रोशन किए जाते हैं ताकि प्रारंभिक पहचान के बारे में बहुत ज़रूरी जागरूकता पैदा की जा सके। यह ऐतिहासिक चार मीनार है जो पिछले 15 वर्षों से लगातार हैदराबाद में गुलाबी रंग में बदल रहा है। जब स्तन में कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित तरीके से विभाजित और बढ़ने लगती हैं तो स्तन कैंसर हो सकता है। मूल रूप से अधिकांश स्तन कैंसर डक्ट के भीतर होते हैं, जिसे डक्टल कार्सिनोमा कहा जाता है। कैंसर का एक छोटा हिस्सा लोब्यूल्स के भीतर होता है, जिसे लोबुलर कार्सिनोमा कहा जाता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के कैंसर, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी कैंसर जो एक आक्रामक प्रकार का कैंसर है, निप्पल का पैजेट रोग जो निप्पल क्षेत्रीय क्षेत्र को शामिल करने वाला कैंसर है, और फाइलॉइड्स कैंसर भी होते हैं। स्तन कैंसर का कारण क्या है? कोई भी कारक जो लंबे समय तक हार्मोन एस्ट्रोजन के संपर्क को बढ़ाता है वह संभावित रूप से कैंसर का कारण बन सकता है। अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त जोखिम कारक हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है महिला होना और स्तन कैंसर का पिछला इतिहास। इसके अलावा जब मासिक धर्म 12 साल से कम उम्र में शुरू होता है या जब मासिक धर्म शुरू होता है 55 साल के बाद भी बंद नहीं होता है तो स्तन पर एस्ट्रोजन का लंबा प्रभाव पड़ता है, जो संभावित रूप से कैंसर का कारण बन सकता है। जीवन शैली के मुद्दे जीवन शैली कारक भी हैं जो स्तन कैंसर का कारण बनने के लिए जिम्मेदार हैं। मोटापा, विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद, क्योंकि वसा कोशिकाएं एस्ट्रोजन का उत्पादन कर सकती हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का लंबे समय तक उपयोग, देर से शादी, बच्चे न होना, 30 के बाद पहला बच्चा होना, स्तनपान न करना भी बहुत महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। एक मिथक है कि स्तन कैंसर केवल मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं को होता है। वास्तव में युवा महिलाएं भी स्तन कैंसर से पीड़ित हो सकती हैं और होती हैं, और पश्चिमी दुनिया की तुलना में जहां 50 साल की उम्र के बाद स्तन कैंसर बहुत आम है, हमारे देश में स्तन कैंसर की चरम घटना 40 से 50 साल की उम्र के बीच है। यह भी एक गलत धारणा है कि स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास इसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। वास्तव में स्तन कैंसर से पीड़ित अधिकांश महिलाओं के पास स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास नहीं होता है। मजबूत पारिवारिक इतिहास यानी ये च्वान संबंधी प्रवृत्ति केवल 5 से 10% के लिए जिम्मेदार है। इसलिए मुझे क्लिनिक में ये आम सवाल पूछे जाते हैं, मेरी माँ को स्तन कैंसर था, क्या मेरा जोखिम बढ़ गया है? मेरी दादी को स्तन कैंसर था, क्या मेरा जोखिम बढ़ गया है? जवाब है नहीं। अलग थलग पारिवारिक इतिहास को मजबूत पारिवारिक इतिहास नहीं माना जाता है और अधिकांश महिलाओं के पास महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास नहीं होता है और इसलिए उनका समग्र स्तन
कैंसर जोखिम प्रभावित नहीं होता है। मजबूत पारिवारिक इतिहास या महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास BRCA एक और BRCA 2 जीन में असामान्यताओं के कारण निम्नलिखित स्थिति में होता है। जब एक या एक से अधिक निकट संबंधी को 40 साल से कम उम्र में स्तन कैंसर हुआ हो या दो से अधिक निकट संबंधी को किसी भी उम्र में स्तन कैंसर हुआ हो, निकट संबंधी जिन्हें स्तन कैंसर हुआ हो और दूसरों को डिंब ग्रंथि कैंसर हुआ हो और एक पुरुष संबंधी को स्तन कैंसर हुआ हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एंजेलिना जोली एक बहुत लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेत्री के पास स्तन कैंसर का बहुत मजबूत पारिवारिक इतिहास था, जिसमें उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी बहनों और चाचियों को उनके तत्काल परिवार में स्तन कैंसर और डिंब ग्रंथि कैंसर था और इसलिए उन्होंने BRCA 1 और BRCA 2 जीन की असामान्यताओं को देखने के लिए एक रक्त परीक्षण कराया और वह सकारात्मक पाई गई और उन्होंने स्तनों और अंडाशयों को निवारक रूप से हटाने का ऑपरेशन कराया, जो उन लोगों के लिए उपचार विकल्पों में से एक है। वकालत और डर पैदा करने के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। एंजेलिना जोली का निर्णय निश्चित रूप से उनके लिए सही था और वंशानुगत स्तन कैंसर से संबंधित यह जानकारी विश्व भर में जानी गई। सकारात्मक नोट पर इसने जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां बहुत कम केंद्र हैं जो आनुवंशिक परामर्श प्रदान करते हैं, इसने उन चिंतित स्वस्थ लोगों में भारी चिंता पैदा की है जो वास्तव में महत्वपूर्ण पारिवारिक इतिहास की श्रेणी में फिट नहीं होते हैं और इसलिए आनुवंशिक परीक्षण कराने से पहले परामर्श बिल्कुल महत्वपूर्ण है। परीक्षण कराने की भावनात्मक प्रेरणा को सिर्फ मामले में रोकना चाहिए, क्योंकि वंशानुगत स्तन कैंसर का उपचार एक बहुविषयक टीम को शामिल करता है जो मरीज और उनके जीवन साथी के साथ मिलकर काम करती है। वंशानुगत स्तन कैंसर को संबोधित करने के मूल रूप से 3 तरीके हैं। पहला है सर्जरी, जिसमें स्तनों और अंडाशयों को निवारक रूप से हटाना शामिल है। इसके बाद दोनों तरफ स्तन पुनर्निर्माण। स्तनों और अंडाशयों को हटाने का कारण यह है कि BRCA 1 और BRCA 2 असामान्यताओं के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वालों में स्तन कैंसर विकसित होने की बहुत अधिक संभावना है। गैर सर्जिकल विकल्पों में हर साल मैमोग्राम, जो कि स्तन का एक्स-रे है, को स्तन के MRI के साथ बारी बारी से कराकर करीबी निगरानी शामिल है। और तीसरा विकल्प है 5 साल के लिए स्तन कैंसर के लिए उपयोग की जाने वाली दवा टैमॉक्सिफेन का उपयोग करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, वंशानुगत स्तन कैंसर का प्रबंधन सरल नहीं है और इसलिए सिर्फ मामले में आनुवंशिक परीक्षण कराना नहीं करना चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। अब मैं कुछ सामान्य मिथकों को छूने जा रहा हूं। गर्भवती महिलाओं को स्तन कैंसर नहीं होता है, यह एक मिथक है। वास्तव में गर्भवती महिलाओं को भी स्तन कैंसर हो सकता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं में स्तन वैसे भी गांठदार महसूस होते हैं और इसलिए स्तन में किसी भी बदलाव का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि गर्भावस्था के दौरान भी स्तन में कोई लगातार बदलाव हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक मिथक है कि स्तनपान से स्तन कैंसर रुक जाता है। स्तनपान जोखिम को काफ़ी हद तक कम करता है, लेकिन यह स्तन कैंसर को रोकता नहीं है। यह मिथक है कि स्तन में चोट लगने से स्तन कैंसर हो सकता है। तथ्य यह है कि स्तन में चोट से स्तन कैंसर नहीं होता है। ब्रा पहनने या टाइट फिटिंग ब्रा या अंडरवायर्ड ब्रा से स्तन कैंसर हो सकता है। यह एक मिथक है, क्योंकि ब्रा पहनने या अंडरवायर्ड ब्रा पहनने से स्तन कैंसर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। डिओडोरेंट और एंटीपर्स्पिरेंट से स्तन कैंसर होता है, यह एक मिथक है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो सुझाव दे कि डिओडोरेंट और एंटीपर्स्पिरेंट से स्तन कैंसर होता है। इस कार्यक्रम को देख रहे पुरुषों के लिए पुरुषों को स्तन कैंसर नहीं होता है, यह एक मिथक है। वास्तव में पुरुषों के पास भी स्तन ऊतक होता है और पुरुष भी स्तन कैंसर विकसित कर सकते हैं। यह आम नहीं है, यह दुर्लभ है। सभी स्तन कैंसर का 1% से कम पुरुषों में होता है। भारत में हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में हर साल
लगभग 300 से 400 नए स्तन कैंसर निदान होते हैं। लंबे समय तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से स्तन कैंसर का उच्च जोखिम होता है और जितना लंबा उपयोग होता है जोखिम उतना ही अधिक होता है। संयुक्त HRT जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है की तुलना में केवल एस्ट्रोजन HRT के साथ स्तन कैंसर का जोखिम अधिक होता है। HRT बंद करने के 5 साल के भीतर यह बढ़ा हुआ जोखिम गायब हो जाता है। जिन महिलाओं का स्तन कैंसर का इलाज हो चुका है और जिनके पास BRCA एक और BRCA2 सकारात्मकता से प्रमाणित मजबूत पारिवारिक इतिहास है, उन्हें HRT नहीं लेना चाहिए। जन्म नियंत्रण गोलियों से जोखिम छोटा है और गोली बंद करने के बाद जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है और गोली बंद करने के 10 साल बाद गायब हो जाता है। जोखिम कारक होने का मतलब निश्चित रूप से स्तन कैंसर होना नहीं है। वास्तव में जोखिम कारक होने पर भी स्तन कैंसर होने की निश्चितता नहीं है, भले ही यह सबसे मजबूत जोखिम कारक क्यों न हो। क्या स्तन कैंसर को रोका जा सकता है? हालांकि स्तन कैंसर को सख्ती से रोकना संभव न हो, लेकिन कई जीवन शैली परिवर्तन हैं जो जोखिम को काफ़ी हद तक कम करने के लिए किए जा सकते हैं। उनमें से पहला है वज़न नियंत्रण। देश में मोटापा एक बढ़ती समस्या है और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ठीक ही जोर दिया है और इस देश के 10 प्रमुख नागरिकों को मोटापा नियंत्रण के बारे में बहुत ज़रूरी जागरूकता पैदा करने के लिए नामित किया है। दूसरा, शारीरिक गतिविधि। हर दिन 30 मिनट का नियमित व्यायाम, सप्ताह में कम से कम 5 दिन। स्वस्थ आहार, पौधे आधारित आहार, उच्च फाइबर आहार, सब्जियों से भरपूर आहार और रोज़ाना बहुत सारे फलों के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 6 महीने तक स्तनपान। जितना लंबा कोई स्तनपान करता है उतना बेहतर है। धूम्रपान बंद करना, सख्ती से धूम्रपान बंद करना और शराब सीमित करना। एक मिथक है कि स्तन स्वपरीक्षण और स्तन जागरूकता में कोई अंतर नहीं है। स्तन स्वपरीक्षण एक नियमित दोहरावदार मासिक स्वपरीक्षण है जो महिला द्वारा हर महीने एक ही समय पर एक निर्धारित विधि से किया जाता है। स्तन स्वपरीक्षण की अवधारणा लाभकारी साबित नहीं हुई है और अब इसे स्तन जागरूकता कहा जाता है, जहां महिलाएं पूरे महीने में अपने स्तनों में किसी भी बदलाव को पहचानती हैं, चाहे वे नहाते समय हों या साबुन लगाते समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे महीने में किसी एक विशिष्ट समय पर नहीं बल्कि पूरे महीने में बदलावों को पहचानें और इसलिए यह एक ऐसी अवधारणा है जो महिलाओं को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करती है कि उनके स्तन सामान्य रूप से कैसे दिखते और महसूस होते हैं, ताकि वे किसी भी बदलाव को नोटिस करने में आत्मविश्वास हासिल करें जो प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने में मदद कर सके। तो यह स्तन जागरूकता एक ऐसी अवधारणा के रूप में विश्व भर में बढ़ती स्वीकृति प्राप्त कर रही है। किन बदलावों के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है? स्तन में कोई भी दर्द रहित गांठ, मैं दर्द रहित गांठ शब्द पर जोर देता हूँ। स्तन के आकार या आकृति में कोई बदलाव, स्तन के ऊपर की त्वचा में कोई बदलाव जैसे कि झुर्रियाँ या गड्ढे, स्तन के रंग में कोई बदलाव, स्तन गहरा लाल या सूजा हुआ दिख सकता है। निप्पल में हाल के बदलाव जैसे निप्पल का अंदर की ओर खींचना, निप्पल के आसपास एक्जिमा और निप्पल से कोई खून का धब्बा। यदि ये बदलाव हैं तो इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और बिना देरी के डॉक्टर से परामर्श करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्तन जागरूकता के लिए 5 सूत्री संहिता है अपने लिए। सामान्य क्या है ये जानना, किन बदलावों को देखना और महसूस करना है ये जानना, देखना और महसूस करना, अपने डॉक्टर को किसी भी बदलाव की रिपोर्ट बिना देरी के करना और अंत में महत्वपूर्ण रूप से 40 साल और उससे अधिक उम्र होने पर मेनियन या कम से कम हर 2 साल में एक मैमोग्राम यानी स्तन का एक्सरे कराना। ये सुंदर बुद्ध प्रतिमा है जो हुसैन सागर झील के केंद्र में है, जो हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है, जो अक्टूबर के महीने में गुलाबी रंग में बदल गई है। अब मेरी प्रस्तुति का ये हिस्सा छूता है कि स्तन कैंसर का निदान कैसे किया जाता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्तन में समस्या का निदान करने के लिए ट्रिपल मूल्यांकन कराना बिल्कुल
ज़रूरी है? ट्रिपल मूल्यांकन का पहला घटक एक अच्छा इतिहास लेना और मरीज की जांच करना है। दूसरा घटक मैमोग्राम, जो कि स्तन का एक्सरे है और स्तन के अल्ट्रासाउंड स्कैन का संयोजन है। और तीसरा घटक यह है कि यदि इमेजिंग में कोई असामान्यता, गांठ या स्तन में कोई असामान्यता हो तो कोर सुई बायोप्सी करानी चाहिए, ना कि फाइन सुई बायोप्सी। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कोर सुई बायोप्सी और फाइन सुई एस्पिरेशन साइटोलॉजी में अंतर है। कोर सुई बायोप्सी जो एक सुई है जो स्तन से ऊतक लेती है, वह स्वर्ण मानक है और इसे अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन में करना चाहिए। ट्रिपल मूल्यांकन क्यों जरूरी है? क्योंकि 10 में से 9 स्तन स्वास्थ्य समस्याएं कैंसर से संबंधित नहीं होती हैं। केवल 10 में से 1 स्तन स्वास्थ्य समस्या कैंसर होती है। और ट्रिपल मूल्यांकन एक विश्वसनीय विधि है जिससे महिला को चाकू के नीचे जाए बिना निश्चित निदान प्राप्त होता है। ट्रिपल मूल्यांकन एक सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। जैसे एक स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक या हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए आवश्यक है, वैसे ही स्तन रोग से निपटने वाले सर्जन के लिए आवश्यकता एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट और एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट होना है, क्योंकि ट्रिपल मूल्यांकन एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ट्रिपल मूल्यांकन के पहले घटक की बात करें तो इतिहास लेना, जैसा कि आप इस कार्टून में देख सकते हैं। डॉक्टर मरीज से नीचे की ओर बात कर रहा है। मरीज बहुत चिंतित है, कुर्सी के किनारे पर बैठा है और बातचीत नहीं कर पा रहा है। और आप इस कार्टून को देखें जहां डॉक्टर मरीज को सुन रहा है। तो डॉक्टर के लिए बड़े कान होना और मरीज को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिपल मूल्यांकन के पहले घटक का दूसरा पहलू डॉक्टर द्वारा नैदानिक स्तन परीक्षण करना है। तो ट्रिपल मूल्यांकन का दूसरा घटक मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड स्कैन का संयोजन है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह एक मैमोग्राम मशीन है, एक डिजिटल मैमोग्राम मशीन। कोई भी पर्याप्त उन्नत तकनीक जादू से अलग नहीं होती है। और 3D मैमोग्राफी, जैसा कि आप में से कुछ ने सुना होगा, प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने में सबसे हालिया क्रांतिकारी प्रगति है। जैसा कि नाम से पता चलता है, 3D मैमोग्राफी स्तन की त्रिआयामी छवियां बनाती है और यह स्तन की अधिक छवियां प्रदर्शित करती है। और स्तन ऊतक के पतले खंडों में, और इसके फायदे हैं कि यह प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने में अधिक प्रभावी है, विशेष रूप से युवा महिलाओं में जिनके पास घने स्तन हैं। ये झूठे सकारात्मक परिणाम और अनावश्यक रिकॉल दर को काफ़ी हद तक कम करता है। और वास्तव में यह अधिक आरामदायक है, क्योंकि अतिरिक्त इमेजिंग की आवश्यकता कम होती है। एक मिथक है कि मैमोग्राफी स्तन कैंसर का पता लगाने में 100% सटीक है। तथ्य यह है कि मैमोग्राम प्रारंभिक स्तन कैंसर को पकड़ने का सबसे कुशल तरीका है, लेकिन किसी भी अन्य स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह वे पूर्ण नहीं हैं। सबसे अच्छे हाथों में भी मैमोग्राफी की सटीकता लगभग 85% है। ऐसा क्यों है? कुछ कैंसर मैमोग्राम पर देखना बहुत मुश्किल होता है, विशेष रूप से लोबुलर कैंसर। दूसरा, मैमोग्राम पढ़ने वाला व्यक्ति कैंसर को मिस कर सकता है, और यह कभी कभी होगा, चाहे पाठक कितना भी अनुभवी क्यों न हो। ट्रिपल मूल्यांकन के दूसरे घटक का दूसरा पहलू मैमोग्राफी के साथ साथ स्तन का अल्ट्रासाउंड स्कैन है। यह मैमोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन है। यह मैमोग्राम पर देखी गई असामान्यताओं को स्थानीय करने में मदद करता है। यह मैमोग्राम पर न दिखने वाले घावों का पता लगाता है, और यह स्तन घाव की सटीक बायोप्सी का मार्गदर्शन करता है, यानी छवि निर्देशित बायोप्सी। स्तन कैंसर में बगल के अल्ट्रासाउंड स्कैन मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्तन कैंसर का पहला पड़ाव बगल में लिम्फ नोड्स तक जाना है। उपचार पर निर्णय लेते समय प्री ऑपरेटिव बगल की नोड स्थिति का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोड सकारात्मक महिलाओं का अधिकांश हिस्सा, यानी जब कैंसर लिम्फ नोड्स में मौजूद होता है, को बिना ऑपरेशन के इस अल्ट्रासाउंड की मदद से और अल्ट्रासाउंड निर्देशित सुई बायोप्सी के साथ पहचाना जा सकता है। और यह एक छवि है
जो बगल में कुछ असामान्य लिम्फ नोड्स दिखा रही है। ट्रिपल मूल्यांकन का तीसरा घटक अल्ट्रासाउंड निर्देशित कोर सुई बायोप्सी है। आप यहां छवि देख सकते हैं, जो एक काली संरचना है, जो एक कैंसर है, और सफेद सुई उस घाव में जा रही है। मैं यहां फिर से जोर देना चाहूंगा कि छवि निर्देशित कोर सुई बायोप्सी स्वर्ण मानक है और एफएनएसी नहीं। यह सुंदर दुर्गम चेरुबू केबल ब्रिज है जो हैदराबाद में अक्टूबर के महीने में गुलाबी रंग में रोशन किया गया है। तो एक बार निदान हो जाने के बाद आगे क्या? उपचार शुरू करने से पहले मरीजों और उनके जीवन साथियों को परामर्श देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मरीज को कैंसर का निदान समझाया जाता है तो मरीज और जीवन साथी और रिश्तेदार बहुत चिंतित होते हैं। बुरी खबर को तोड़ने में समय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या स्तन कैंसर के उपचार में परामर्श महत्वपूर्ण है? बिल्कुल हाँ। कई बार मरीज डॉक्टरों से नाराज होते हैं क्योंकि डॉक्टर शब्दों और संचार में असफल हो जाते हैं, और संचार एक अलग कला है जो गैर चिकित्सा व्यक्ति की भाषा में दवा की बात करती है। मरीज के दिमाग में कई सवाल आ सकते हैं। पहला है कि मैं कितने समय तक जीवित रहूंगा? क्या मुझे अपना स्तन हटवाना पड़ेगा? क्या यह मेरे लिए सबसे अच्छा उपचार है? क्या कोई विकल्प हैं? दुष्प्रभाव क्या हैं? छोटी और लंबी अवधि की जटिलताएं क्या हैं? क्या यह मेरे रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव डालेगा? इन सभी सवालों को डॉक्टर द्वारा बिना जल्दबाजी के संबोधित करना चाहिए, क्योंकि मेरी राय में परामर्श उपचार का 50% से अधिक है। क्योंकि आप कभी कभी ठीक कर सकते हैं, अक्सर राहत दे सकते हैं, लेकिन मरीज को हमेशा सांत्वना देना बिल्कुल जरूरी है। यह सुंदर किम्स अस्पताल की इमारत है जो गुलाबी रंग में रोशन की गई है। मैं यहां कैंसर के ग्रेड और स्टेज के महत्व पर जोर देना चाहूंगा। कैंसर का ग्रेड कैंसर के फैलने की संभावना है। ग्रेड 1 कैंसर धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है। ग्रेड 3 कैंसर तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। कैंसर का स्टेज यह निर्धारित करता है कि कैंसर मेटास्टेसाइज्ड है या नहीं, यानी यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल गया है या नहीं। मूल रूप से स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर को प्रारंभिक कैंसर माना जाता है, जहां कैंसर स्तन तक सीमित होता है, जबकि स्टेज 3 कैंसर और स्टेज 4 कैंसर को प्रगत कैंसर माना जाता है, जहां कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया है। 4 कैंसर का मतलब है कि कैंसर बहुत बड़ा है, या यह शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे फेफड़े, जिगर, हड्डी या मस्तिष्क में फैल गया है, और इसलिए ग्रेड कैंसर के फैलने की संभावना को दर्शाता है, और स्टेज वास्तव में कैंसर के फैलाव की सीमा को निर्धारित करता है। यह भव्य तेलंगाना विधान सभा भवन है जो हाल ही में निर्मित हुआ था, जो हैदराबाद में अक्टूबर के महीने में गुलाबी रंग में बदल गया। कैंसर का निदान करने और पर्याप्त परामर्श के बाद यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बहु विषयक टीम को मरीज को दी जाने वाली उपचार निर्धारित करने में शामिल होना चाहिए। बहु विषयक टीम में सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एक स्तन देखभाल नर्स और यदि आवश्यक हो तो एक उपशामक देखभाल विशेषज्ञ भी शामिल हैं। मूल रूप से 5 उपचार के तौर तरीके हैं जो बहु विषयक टीम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उपचार बहुत व्यक्तिगत होता है। इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और लक्षित थेरेपी शामिल है। एक आम मिथक है कि मैस्टेक्टोमी या जिन महिलाओं की मैस्टेक्टोमी होती है वे लंबे समय तक जीवित रहती हैं। तथ्य यह है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो सुझाव दे कि जिन महिलाओं की मैस्टेक्टोमी होती है वे लंबे समय तक जीवित रहती हैं, और 1980 के दशक से स्तन संरक्षण सर्जरी यानी लंपेक्टोमी कराने वाली महिलाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। मैं ऑनकोप्लास्टिक स्तन संरक्षण सर्जरी को छूना चाहूँगा, जो हाल के समय में विकसित कुछ तकनीकों को शामिल करता है, जो लंपेक्टोमी के बाद स्तन को फिर से आकार देने का लक्ष्य रखती है। यह ऑन्कोलॉजिकल सिद्धांतों को प्लास्टिक सर्जिकल तकनीकों के साथ जोड़ती है। इसका उद्देश्य कैंसर को पूरी तरह से हटाना है, स्पष्ट मार्जिन के साथ,
लेकिन सर्जरी के बाद स्तन को अच्छी कॉस्मेटिक स्थिति प्राप्त करने पर जोर है। यह राजभवन है, देश का एकमात्र राजभवन हैदराबाद में, जो 2020 में कोविड वर्ष से शुरू होकर साल दर साल गुलाबी रंग में बदल रहा है। पिछले 5 वर्षों से राजभवन स्तन कैंसर जागरूकता के समर्थन में गुलाबी रंग में बदल रहा है। मेरी प्रस्तुति का अंतिम घटक स्क्रीनिंग और स्तन कैंसर वकालत के महत्व को छूना है। मुझसे यह आम सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर मेरे पास गांठ नहीं है, क्या मुझे मैमोग्राम की ज़रूरत है? जवाब है हाँ, क्योंकि मैमोग्राम महिला या डॉक्टर के गांठ महसूस करने से कई साल पहले स्तन कैंसर का पता लगाते हैं, जिससे जीवित रहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा सवाल है, डॉक्टर मेरा पिछले साल का मैमोग्राम सामान्य था, तो आप मुझे इस साल फिर से क्यों कह रहे हैं? जवाब है, मैमोग्राफी प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करती है, ये कैंसर को रोकती नहीं है। यह अच्छा है कि किसी ने पिछले साल स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराया था। हालांकि बाद के वर्षों में मैमोग्राम के सामान्य होने की कोई गारंटी नहीं है। हर साल मैमोग्राम कराने से कैंसर का पता लगाने की संभावना बढ़ जाती है जब यह बहुत छोटा होता है, इससे पहले कि डॉक्टर या मरीज इसे महसूस कर सकें, और इसके लिए बहुत मजबूत सबूत हैं। कैंसर को बहुत छोटे अस्पष्ट चरण में पकड़ना उत्कृष्ट दीर्घकालिक जीवित रहने की सुनिश्चितता देता है। इसलिए 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं के लिए हर साल स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है। यह एक मैमोग्राम है, स्तन का एक्स-रे। एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम जो एक छोटा कैंसर दिखाता है, जो लगभग 10 मिलीमीटर का है, जो इस गांठ को महसूस करने से पहले कई साल लेता। स्तन स्क्रीनिंग क्या है? इसलिए स्तन स्क्रीनिंग स्तन का एक्स-रे है, और यह तब स्तन कैंसर को दिखा सकता है जब वे महिला या डॉक्टर के महसूस करने के लिए बहुत छोटे हों। यह स्तन का एक्स-रे है जो एक 50 साल की महिला में स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत होने पर प्लियोमॉर्फिक, घातक, कैंसरस माइक्रो कैल्सिफिकेशन के समूह को दिखाता है। इसे गांठ बनने में लंबा समय लगता, और इसलिए स्क्रीनिंग कराना इतना महत्वपूर्ण है। और स्क्रीनिंग क्यों करानी चाहिए? स्क्रीनिंग स्तन में छोटे बदलावों को खोजने में मदद करती है, इससे पहले कि वह दिखाई दे, और प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाना इस महिला के लिए सफल उपचार का सबसे अच्छा मौका प्रदान करता है, जो उसकी दीर्घकालिक जीवित रहने की संभावना को काफ़ी बढ़ा देता है। क्या स्तन स्क्रीनिंग सभी आयु समूहों में प्रभावी है? स्तन स्क्रीनिंग केवल 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में प्रभावी है। तो यदि आप 40 साल के हो गए हैं तो मेइनियन एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाएं। महिलाएं मैमोग्राफी के लिए हिचकिचाने के 2 आम कारण हैं। पहला, महिलाएं सोचती हैं कि मैमोग्राफी से विकिरण खतरा होता है। ये सच नहीं है। मैमोग्राफी से विकिरण बहुत बहुत कम होता है। ये उस पृष्ठभूमि विकिरण के बराबर है जो हम सभी 2 महीने की अवधि में अनुभव करते हैं, और मैमोग्राफी से विकिरण प्रभाव इतना छोटा है कि इस परीक्षण को कराने से हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि महिलाएं सोचती हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है। जवाब है कि अगर यह ठीक से किया जाए तो दर्द नहीं होना चाहिए, केवल क्षणिक असुविधा होनी चाहिए। मैमोग्राफी कराने के लाभ किसी भी जोखिम से कहीं अधिक हैं। क्या स्तन कैंसर स्क्रीनिंग स्तन कैंसर को रोकती है? नहीं। स्तन कैंसर स्क्रीनिंग केवल प्रारंभिक चरणों में स्तन कैंसर को खोजने में मदद करती है। कुछ महीने पहले मुझे हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत करने का विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ, जहां मैं पिछले 18 वर्षों से फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई प्रभावशाली पहलुओं को उजागर करने में सक्षम था। वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पिंक कनेक्शन के संपादकीय पृष्ठ पर हस्ताक्षर भी किए, जो त्रैमासिक समाचार प्रकाशन है। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया, और यह मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण रहा है। निष्कर्ष में प्रारंभिक पहचान जीवन बचाती है। यदि आप 40 साल और उससे अधिक उम्र के हैं तो कृपया एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम शेड्यूल करें और इसे हर साल बिना असफलता के करवाएं। मैं यहाँ इंगित करना चाहूँगा कि परंपरागत
रूप से हमारे देश में महिलाएं अपनी ज़रूरतों को आखिरी रखती हैं और उनके लिए परिवार की ज़रूरतें हमेशा पहले आती हैं और उनका अपना कल्याण और उनकी अपनी सेहत कोई अपवाद नहीं है। ये अभी भी अंतिम प्राथमिकता है। मैं अपनी शुरुआती बात को दोहराना चाहूँगा कि एक महिला परिवार का केंद्रीय तंत्र है। यदि वह स्वस्थ है तो परिवार भी स्वस्थ होगा। ये पुरुषों का, हम सभी का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये पुरुषों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन की महिलाओं को स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाने के लिए सुनिश्चित करें। चाहे वह आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी दादी हो, आपकी चाची हो और आपकी दोस्त भी, कृपया सुनिश्चित करें कि वे 40 साल और उससे अधिक उम्र होने पर मेनियन एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाएं। यह महिलाओं और सज्जनों सबसे अच्छा उपहार है जो आप उन्हें दे सकते हैं। यह सरल और दयालु इशारा प्रारंभिक पहचान के माध्यम से दर्जनों जिंदगियां बचाने की क्षमता रखता है। और इस ऐतिहासिक दिन पर आइए हम यह संकल्प लें कि हम अपने परिवारों की महिलाओं को मेनियन एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाने के लिए सुनिश्चित करेंगे और इसे साकार करेंगे। मैं अब 5 सवाल प्रदर्शित करूंगा जिनका जवाब साधारण हाँ या नहीं के साथ देना होगा और मुझे बहुत यकीन है कि आप आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल, क्या स्तन कैंसर भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाला सबसे आम कैंसर है? हाँ या नहीं। दूसरा सवाल, क्या स्तन कैंसर पुरुषों में नहीं होता है? हाँ या नहीं। क्या दर्दनाक गांठ स्तन कैंसर का सबसे आम लक्षण है? हाँ या नहीं। चौथा सवाल, क्या मैमोग्राम प्रारंभिक चरणों में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा स्क्रीनिंग तरीका है? हाँ या नहीं। और अंतिम सवाल, क्या मरीज को परामर्श देना कैंसर देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? हाँ या नहीं। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं और नमस्कार।